बेसल गैंग्लिया, एक तरफ से आवाज आ रही, बाकी लोगों ने शेड्यूल देखा है और नीचे देख के किस चीज में बिजी हो, इसको बुलाओ। हाँ, अब आ गए हो ना क्लास में, तो बी है। तो we will be discussing the basal nuclei or the basal ganglia today. What is the more correct term, basal ganglia or basal nuclei? What is a ganglia? What is a ganglion? हाँ, one by one. हाँ, collection of cell bodies in CNS or in PNS? कलेक्शन, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से है कि सिट डाउन, you know, nuclei means, nuclei also means कि collection of nerve cell bodies, and ganglia का literal meaning भी क्या है, collection of nerve cell bodies. तो अब डिफरेंशिएशन कहाँ करना है कि कौन सा कलेक्शन CNS में है और कौन सा कलेक्शन PNS में है. So remember one thing, collection of nerve cell, don't talk, please don't talk. Collection of nerve cell bodies और the body of the neuron, जहाँ पे वो soma है, that collection of nerve cell bodies in the peripheral nervous system is known as ganglia, and collection of nerve cell bodies in the central nervous system is known as nuclei. So more correct terminology is basal nuclei instead of basal ganglia. वो शुरू में जब बना होगा. अब why these ganglia are known as basal ganglia? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, there are only two kinds of things in the nervous system. There is one gray matter and there is one white matter. And you know, in the gray matter there is, what is gray matter? Gray matter में myelin sheath है, axons है. White matter में क्या है, myelin sheath covered क्या है, axons है, तो इसीलिए वो क्या है, white matter है. Gray matter में क्या है, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडीज, जहाँ पे नर्व सेल बॉडीज है वहां पे ग्रे मैटर है. तो हमें बेसल गैंग्लिया क्यों टर्म दिया है, हम ग्रे मैटर ही कह देते. कहाँ लोकेटेड है ये, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? यू हैव टू, प्लीज डोंट टॉक, यू हैव टू आंसर. ये बहुत बात कर रही है ये वाली रो जो है ना. हाँ, तुमसे पूछ रही हो, तो क्या इंपॉर्टेंट था जो तुम रात भर से नहीं बता पाई और अब तुमको सुबह बताना है? हाँ, या कल नहीं बता पाए तुम और आज का दिन तुम्हें इसी बात से शुरू करना है? एक अलग से टर्म क्यों यूज करा बेसल गैंग्लिया? क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स ऑलरेडी हैं. या तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं पूरे जो भी कुछ है उसको ग्रे मैटर में और व्हाइट मैटर में. तुम कुछ भी देख लो, इंटरनल कैप्सूल क्या है, व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है. सेप्टम पेलुसिडम क्या है, ग्रे मैटर है. देयर आर सर्टेन न्यूक्लियाई एक शीट में स्प्रेड है. तो मतलब हर चीज को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एज ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर. तो हमने ये बेसल न्यूक्लियाई टर्म, या अब बेसल गैंग्लिया से मोर करेक्ट इज बेसल न्यूक्लियाई टर्म क्यों लिया है? हाँ, व्हाइट मैटर में, सेरिब्रम में ग्रे मैटर कहाँ है, पेरीफेरी पे है या सेंटर पे है? पेरीफेरी पे है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ब्रेन में ग्रे मैटर इज एट द पेरीफेरी एंड व्हाइट मैटर इज इन द सेंटर. एंड दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द स्पाइनल कॉर्ड वेयर द ग्रे मैटर लाइज इन द सेंटर. वो हॉर्न शेप बटरफ्लाई जो है वो कहाँ है, सेंटर में है, और व्हाइट मैटर वहाँ कहाँ है, पेरीफेरी पे है. तो यहाँ पे मतलब ब्रेन में जो ग्रे मैटर है दैट इज एट द पेरीफेरी, और बेसल न्यूक्लियाई कहाँ है? दे आर, ये व्हाइट मैटर में स्कैटर्ड ग्रे मैटर है, मतलब दे आर मोर टुवर्ड्स द बेस, दे आर नॉट लोकेटेड एट द periphery, they are not located in the main cerebral cortex which is located at the periphery. They are more towards the center, more towards the base, but this is gray matter and not white matter. So this is the basic difference. ये एक पेशेंट का एक पोस्चर दिख रहा है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या है? हाँ, डायग्नोसिस बना दिया. अब तुम बड़े डॉक्टर हो गए हो कि इसको पार्किंसंस डिसीज है. क्या क्या इसमें क्या फीचर्स तुमको दिख रहे हैं? पोस्चर कैसा दिख रहा है? बेंट है, और हाँ, मास्क लाइक फेसेस है, ठीक है, और कुछ पिल रोलिंग मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, हाइपोकाइनेसिया होता है
किसी ने देखा है अपने लोकेलिटी सोसाइटी में कोई ओल्ड एज पर्सन जिसको पार्किंसोनिज्म डायग्नोज हुआ हो? किसी ने देखा है? कैसे चलते हैं वो लोग? शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, लॉन्ग स्टेप्स होते हैं? शॉर्ट स्टेप्स होते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं, कोई भी काम करते हुए वो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है, ट्रैमर्स होते हैं और बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है कुछ भी काम करने को शुरू करने से पहले. सो इन दोज केसेस what is affected is one of the nuclei or one of the constituent of the basal nuclei. So we will discuss all the basal nuclei together, although they have got different functions. पूरा सारे basal nuclei बहुत linked नहीं है, पर कौन कौन से हैं, anatomically कहाँ कहाँ हैं और उनके connections कैसे हैं, वो आज का जो lecture है that is on that. So this is the case history in case of patient of Parkinson's disease. A patient aged 65 years presents with unintentional or resting tremors of hand and slow voluntary movements. On examination, the following signs are observed. There are pill rolling movements of hands, face is expressionless, mask-like faces. Please don't talk. Morning class में please बात मत करो. Speech is slurred and monotonous. They cannot stand upright. There is short shuffling gait, cogwheel rigidity of the joints, and the neurologist made the diagnosis of the Parkinson's disease. So we will discuss about the basal nuclei or the basal ganglia today. तुम लोगों ने इनके नाम जो है ना, वो बाकी जो तुम्हारी जो क्लासेस हैं उसमें you must have heard the names of these structures because they lie in relation to the lateral ventricles. They lie in relation to the internal capsule. So you must have heard the names. So what are the basal nuclei? Corpus striatum. और इसको और ब्रेक करेंगे, और क्या है? हाँ, corpus striatum में क्या क्या included है, फिर मैं ये बोलूंगी. Caudate nucleus, lentiform nucleus, putamen and globus pallidus are the parts of the lentiform nucleus. There is one caudate nucleus. What are the other basal nuclei? Substantia nigra, or there is one subthalamic nucleus and zona incerta. तो तुमने caudate nucleus, lentiform nucleus मुझे बता दिया है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस है, जोना इंसर्टा है, एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा है. दे आर द पार्ट्स ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई. So then amygdaloid body is also included in the basal nuclei. So you can see this is the caudate nucleus. This is the tail of the caudate nucleus. It is a C-shaped kind of nucleus, and at the tip of the tail of caudate nucleus lies the amygdaloid body. Amygdaloid body is not functionally related to the basal nuclei. It is only topographically present at the tip of tail of the caudate nucleus. Then substantia nigra lies in which midbrain? It lies in the midbrain. So substantia nigra, subthalamic nucleus lies below the thalamus. So these all are, then globus pallidus and putamen, they are the parts of the lentiform nucleus. So they are also included. So these all are the basal nuclei which we are going to discuss today. ये cavity क्या है? This is the sagittal section of the brain, I would say, somewhat taken laterally, ताकि तुमको मतलब ये जो basal nuclei है बिल्कुल midline से नहीं है, क्योंकि septum pellucidum और ये नहीं दिख रहा, थोड़ा सा laterally ले लिया है. ये cavity क्या है? Lateral ventricle. So cavity of the cerebrum is the cerebral hemisphere is the lateral ventricle, and what is lying in the floor of the body of the lateral ventricle, you can identify this is the caudate nucleus. So this caudate nucleus, it is extending from the anterior horn of the lateral ventricle, then it is lying in the floor of the lateral ventricle. This is the tail of the caudate nucleus. It is lying where? What is this? How many horns are there in the lateral ventricle? 3 horns. What are those? Anterior horn. Raise your hands. Anterior horn lies in which lobe? तुम बोलो बेटा. वो हाँ. Anterior horn lies in the frontal lobe and posterior horn lies in the
occipital lobe, inferior horn lies in the temporal lobe. So these three are the extensions of the lateral ventricle. Now can you identify the tail of the caudate nucleus? Is it lying in the floor of the inferior horn of the lateral ventricle or in the roof of the inferior? It is lying in the, very good, sit down. It is lying in the roof of the inferior horn of the lateral ventricle. So this way, this caudate nucleus, it is like it is in the form of C. The body is lying in the floor of the body of lateral ventricle and tail is lying in the roof of the inferior horn of lateral ventricle. Then at the tip of the tail lies the amygdaloid body. It is only topographically connected. Then you can identify this is the lentiform nucleus. So we will see the horizontal section also, जो तुमने internal capsule में देखा है, इनके relations देखेंगे, thalamus से कैसे related है. Then you can identify the thalamus also. Thalamus and the lentiform nucleus and the caudate nucleus, they are separated by which white matter? Internal capsule. So internal capsule separates the thalamus from the lentiform nucleus. We will see the horizontal section. So they are, these basal nuclei, they are telencephalic in origin. So why these why there are three horns in the lateral ventricle? Why everything in the brain is like C-shaped? ऐसा पीछे से curve होके क्यों आ गया है brain? हाँ? CSF accommodation के लिए there are lateral ventricle. और कोई इसका ना developmental reason है? कोई बताएगा? किसी ने पढ़ा? Cranial cavity is, it is fixed, ठीक है, अराउंड 1200 रहता है सीसी क्रेनियल कैविटी और ब्रेन का जो पूरा सरफेस एरिया है वो 1600 सीसी के अराउंड है. एंड प्लस वो क्रेनियल कैविटी जो थी वो 1200 सीसी वो पीछे बिल्कुल फिक्स हो गया. तो तब क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो नीचे की तरफ ऐसा सी शेपेड कर्व हो गया, इसीलिए वो इंफीरियर हॉर्न बन गया. कॉर्डेट न्यूक्लियस भी पूरा ऐसा घूम के आ गया. तो ये सब बहुत सारी चीजें इसकी सी शेपेड कर्व में चली गई. So it is, these basal nuclei are telencephalic in origin. They constitute the extrapyramidal system. What do you understand by the term pyramidal system and extrapyramidal system? Raise your hands. Corticonuclear and corticospinal is which system? Pyramidal system. And basic is कि those fibers are, they work at our will. कोई भी काम जब हम अपनी मर्जी से करते हैं तो वो किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज थ्रू दी पिरामिडल सिस्टम ऑफ फाइबर्स. तुमको एक ग्लास उठाना है, यहाँ से उठा के रखना है, तो तुम्हारा कौन सा लिम्ब एक्टिवेट हो रहा है? अपर लिम्ब. कहाँ से फाइबर, कौन से फाइबर्स आ रहे हैं? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स. दे विल बी रीचिंग टू विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? सर्वाइकल, लंबार और सेक्रल. सर्वाइकल पार्ट, ब्रेकियल प्लेक्सस. तो दे विल बी रीचिंग टू दी सर्वाइकल पार्ट ऑफ इट. तो ये सब और कौन कमांड दे रहा है? सेरिब्रम में कौन सा एरिया अफेक्टेड हो रहा है जब हम ये कमांड दे रहे हैं कि मुझे ये क्लास उठाना है? प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज द एरिया नंबर 4 थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स. दूसरे साइड का हेमिस्फेयर कंट्रोल कर रहा है, ये तुम्हें पता है, राइट लेफ्ट कंट्रोल, और फिर वो हम पिक कर रहे हैं. तो ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज द पिरामिडल सिस्टम. जो चीजें हमारी मर्जी से नहीं हो रही हैं पर हो रही हैं, वो क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम. so basal nuclei are a part of the extra pyramidal system, and then they play an important role in the control of posture and the voluntary movements. इसीलिए वो जो bend हो गया है पार्किंसोनिज्म में posture, because basal nuclei are affected. We have discussed कि हम इनसे basal ganglia क्यों नहीं कह रहे हैं और basal nuclei क्यों कह रहे हैं. So they are the subcortical masses of the gray matter. क्योंकि gray matter cortex में कहाँ है? cerebral cortex. ये जो periphery में gray matter दिख रहा है, ये सब क्या है? cortical mass of gray matter है. And basal nuclei, because they are more located towards the base, towards the center, so they form the subcortical masses of the gray matter. They are situated within the white core of each cerebral hemisphere. Now what are the parts of the basal nuclei? Can you identify these structures? ये C-shaped nucleus क्या है?
caudate nucleus, then you can identify the thalamus, and there is putamen, and the globus pallidus, they form the lentiform nucleus. And what is this? Amygdaloid body. So these structures, now can you identify these structures over here also? ये क्या है? Caudate nucleus. ये कौन सा section है? Horizontal section. From the anterior end till the posterior end एक horizontal section लिया है, जिसमें you can identify this is the head of the caudate nucleus, which is lying in the floor and lateral wall of the horn of which horn? Anterior horn of the lateral ventricle. So it is lying in the lateral wall and in the floor of anterior horn of lateral ventricle. This is the caudate nucleus. This is what? Thalamus, and this cavity is the third ventricle. The cavity between the two thalami is the third ventricle. Then thalamus is separated from the lentiform nucleus by this structure. This is the internal capsule. Anterior limb, genu, and the posterior limb of the internal capsule. Then can you identify, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है एक part थोड़ा pale है and one is dark in color. So the part of the lentiform nucleus which is darker in color is the putamen, and the part which is lighter in color is the globus pallidus. So these are the two parts of the lentiform nucleus. The medial one is the globus pallidus and the lateral darker one is the putamen part of the lentiform nucleus. This is the head of the caudate nucleus and these are the two thalami. So corpus striatum, claustrum is also there. Can you identify the claustrum? This is also the grey matter. So this is the grey matter which is present over here. Amygdaloid body also you can identify, it is lying in the roof of the inferior horn of the lateral ventricle. So amygdaloid body. Now this is the classification which everybody should know, and this table is given as it is in the Gray's Anatomy. The basal ganglia, basically they are divided into corpus striatum and the amygdala, and corpus striatum includes neostriatum and the paleostriatum. ये striated क्यों बोल रहे हैं इनको? है तो ये ग्रे मैटर, फिर striated क्यों बोल रहे हैं? striations क्या है यहाँ पे? कौन से striations हैं? मसल्स तो है नहीं, तो striated नहीं. क्या striations है? Fibers मतलब white matter. So although they are, this is the white matter, but they are connected to each other through the white matter. अभी ये पिछला वाला जो इसमें भी देखो, यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा white नहीं दिखता है, बीच में कुछ ग्रे दिखेगा. ये देखो ये striations दिख रहे हैं, ये सब क्या है? White matter है. So that is why इसको corpus striatum, then it is divided into neostriatum and paleostriatum. Paleostriatum includes the globus pallidus and neostriatum includes the caudate nucleus and the putamen. And putamen and globus pallidus collectively they form the lentiform nucleus. So that means one part of the lentiform nucleus is paleostriatum and one part of the lentiform nucleus is neostriatum. So which is neostriatum in lentiform nucleus? Putamen. And which is the older part or the paleostriatum in the lentiform nucleus? The globus pallidus. Globus pallidus is pale, putamen is dark. अभी हम देखेंगे globus pallidus efferent भी है और putamen जो है that is the sensory part. So we will be seeing all these things. Now corpus striatum. Corpus striatum means lentiform nucleus and caudate nucleus. जब corpus striatum बोल रहे हैं तब वहां कुछ neo नहीं है, कुछ ये नहीं है. तुम्हें दो terms याद रखने हैं, caudate nucleus and the lentiform nucleus. Collectively they form the corpus striatum. Now can you identify these two structures? ये क्या है? Caudate nucleus. The head, body and the tail of the caudate nucleus. At the tip of the tail lies the amygdaloid body. But remember one thing, amygdaloid body is not a part of corpus striatum. It is totally different. Amygdaloid body functionally it is included in the limbic system. And basal ganglia, the basal nuclei, they have got a different function. but सिर्फ topographically क्योंकि वो subcortically located है, इसलिए हम amygdaloid body को यहाँ पे consider कर रहे हैं.
This is the lentiform nucleus. What are the two parts of lentiform nucleus? Globus pallidus and the putamen. So this is then this is the thalamus. Again you can see ये striations दिख रहे हैं. These are the fibers of corona radiata coming from the cerebral cortex. So these fibers, they will be passing through the through the internal capsule, then through the crus cerebri. ये वही corticospinal corticonuclear fibers है, which are converging and forming the internal capsule. They are passing through this gray matter. So that is why this gray matter becomes striated. So they are situated lateral to the thalamus. It is almost completely divided into caudate nucleus and lentiform nucleus by a band of nerve fibers, the internal capsule. So internal capsule that lies between. So now this is something which is seen in the horizontal section of the brain, and this is one cerebral hemisphere. ऐसा ही same दूसरा cerebral hemisphere में भी दिखता है. इसको schematically बनाया है. तुमको एग्जाम में अगर बनाना है कॉर्पस स्ट्राइटम तो तुमको ये वाला डायग्राम, तुमको इंटरनल कैप्सूल भी बनाना है तो तुमको ये आना चाहिए. These are the relations of the internal capsule also. So this is the head of the caudate nucleus. Here you can identify the thalamus. Now these are the two parts of the lentiform nucleus. This is the globus pallidus and this is the putamen, and these are separated by what? They are separated by the internal capsule, the anterior limb, genu, and the posterior limb of the internal capsule. Below the thalamus lies the subthalamic nucleus also, and here lies the claustrum. Now some more white fibers, they are also seen in this schematic diagram. और क्या क्या white fiber यहाँ पे internal capsule के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है? External capsule. So external capsule is separating putamen from the claustrum, and then there are medial and lateral medullary lamina also. Yeah, internal and external medullary lamina, they are separating the globus pallidus into two parts and then separating globus pallidus from the putamen. So these white fibers or white matter, they are also visible. The internal capsule, external capsule, medial and lateral medullary laminae. So they are also seen in this picture. कोई बताएगा ये क्लॉस्ट्रम के बाहर क्या है? एक्सट्रीम लमाइना होता है, और एक्सट्रीम लमाइना के बाहर क्या है? सबसे कॉर्नर पे क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स का कोई लोब मिलेगा, बताओ. Insular lobe. So claustrum lies deep to the insular lobe, and extreme capsule separates the claustrum from the insular lobe. So insular lobe lies at the extreme. So this I would say this is the insular lobe. So phylogenetically, the corpus striatum forms two distinct functional units, the neostriatum or the striatum and paleostriatum or the pallidum. What is included in the neostriatum? Caudate nucleus and the which part of lentiform nucleus? Putamen part of the lentiform nucleus. ऐसे ही आवाज आनी चाहिए, है ना? Putamen part of the lentiform. And what is included in the paleostriatum? तुम अगर बोल लोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा. Globus pallidus forms the paleostriatum. So corpus striatum, lentiform nucleus, caudate nucleus, and globus pallidus is paleostriatum. Putamen and the caudate nucleus together they form the neostriatum. Now ये थोड़ा सा ना और ज्यादा हो जाता है, ये किसी का सेमिनार बना हुआ था, मतलब पीजी लेवल का मुझे लगा, लेकिन एक तुम्हें बता देती हूँ, ये तुम्हारे लेवल पे तुम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा कि striatum is divided into dorsal striatum and ventral striatum. याद रखना. And pallidum is also divided into dorsal pallidum and the ventral pallidum. वो globus pallidus को भी dorsal ventral में divide कर दिया है. नहीं, dorsal pallidum में globus pallidus है, ventral pallidum कुछ और है, देखते हैं क्या क्या है इसमें. So dorsal striatum, it includes the classical striatum जो अभी हमने पढ़ा है. क्या क्या है उसमें? caudate nucleus and the putamen part of the lentiform nucleus. And ventral striatum,
It includes the nucleus accumbens and olfactory tubercle. तुम लोग नहीं पढ़ते हो इसको, वैसे तुम्हारे बुक्स में नहीं है. पीजी लेवल पे if you want to remember, then ventral striatum includes the nucleus accumbens. Here lies the nucleus accumbens, and this is the olfactory tubercle. Can you correlate this thing? वहां से olfactory stria बन रहे हैं. olfactory stria कब बनते हैं? olfactory bulb तुमने देखा है. olfactory bulb से olfactory tract, then it divides into medial and lateral olfactory stria. So olfactory stria is terminating into some olfactory tubercle. If you want to remember, then it is okay, but ventral striatum includes the nucleus accumbens and the olfactory tubercle. Then dorsal pallidum is the globus pallidus. जो हम पढ़ रहे थे वो सब दोनों को किस किस में आ रहे हैं? dorsal part में. And ventral pallidum, it lies in the anterior perforated substance. What do you understand by the term perforated substance? नहीं, perforated substance anterior भी है, posterior भी, पर perforated substance होता क्या है? देखा तुमने ब्रेन में? क्रिब्रीफॉर्म होता है वो. क्रिब्रीफॉर्म प्लेट नहीं है वो तो इसमें बोन में है. क्या है परफोरेटेड सब्सटेंस? एनीबडी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परफोरेटेड सब्सटेंस? इट इज फॉर व्हाट? व्हाई द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन इज परफोरेटेड? फॉर व्हाट पर्पस इट इज परफोरेटेड? हाँ, फॉर पैसेज ऑफ फाइबर्स. they will be coming out from the brain and then they will be perforating the surface of the brain. No, it is not like that. They are for the central branches of the arteries. जो मतलब क्या होगा? circle of Willis या blood supply of the brain, that is lying where? That is lying at the base of the brain. But if they have to go inside into the brain, so certain smaller vessels, तुम आज जाके base of the brain देखना, बिल्कुल छोटे छोटे सेंट्रल ब्रांचेस के लिए पोर्स दिखेंगे. दोस पोर्स आर दी perforated substances. So there is one anterior perforated substance and it is lying below the anterior commissure. So that is included in the ventral pallidum. लेकिन perforated substance खुद basal nuclei नहीं है. ये जो basal nuclei का ventral pallidum part वहाँ anterior perforated substance के पास में lie कर रहा है. इसीलिए मैं कह रही हूँ तुम्हें याद रखना है, रखो. नहीं रखना तो तुम्हें क्या याद रखना है कि कॉर्पस स्ट्राइटम इज ऑफ टू टाइप्स, नियोस्ट्राइटम एंड पेलियोस्ट्राइटम. नियोस्ट्राइटम इंक्लूड्स caudate nucleus and the putamen, and paleostriatum includes the globus pallidus. और पर्पस याद रखना है तो ये दोनों क्या है? डॉर्सल पैलिडम है और डॉर्सल स्ट्राइटम है. वेंट्रल पैलिडम, वेंट्रल स्ट्राइटम कुछ और है. Now we will talk about the relations of the caudate nucleus. तुम खुद ही बता सकते हो. It is a large comma-shaped mass of the gray matter and it includes a head, body and tail. So what are the relations of the head of the caudate nucleus? Where it is lying? Anterior horn के कौन से wall के relation में आ रहा है? Lateral wall and floor of the anterior horn of lateral ventricle. And where is the body lying? It is coming in relation to what? Body of lateral floor of body of lateral ventricle. So body of the caudate nucleus is lying in the floor of, and tail is lying where? Roof of inferior horn of lateral ventricle. So these are the three parts. Head is large rounded. It forms the, this is the head. This is the anterior horn of the lateral ventricle. This is which section? Horizontal or coronal? Coronal section. And it is taken at the level of anterior horn. That means frontal lobe में से कहीं ये section लिया होगा और head क्या form कर रहा है? It is forming the floor and lateral wall of anterior horn of lateral ventricle. It is then body, it is long and narrow and it forms the floor of the central part of the lateral ventricle. It is separated by, from thalamus by two things, the stria terminalis and the thalamostriate vein. What is stria terminalis? Projection fibers from the amygdaloid body. They are the stria terminalis. They are terminating into different areas. So stria terminalis and thalamostriate vein, they are lying between the body of the
the caudate nucleus and the thalamus. Now tail of the caudate nucleus, now this is the tail of the caudate nucleus, which is lying in the roof of inferior horn. It forms the roof of inferior horn of the lateral ventricle, and it terminates anteriorly in the amygdaloid body, only terminating topographically. It is not functionally related to the amygdaloid body. Now what is lentiform nucleus? It is biconvex in shape. ठीक है, ऐसा egg, there is a biconvex mass of gray matter. Then it includes what? It lies beneath the insular lobe. This is the insular lobe, so it is lying beneath the insular lobe. It forms the lateral boundary of the internal capsule. You know the relations. So this is the internal capsule, and the lentiform nucleus, it is lying lateral to the posterior limb of the internal capsule. It has three surfaces, and it is divided into two parts. So what are the two parts? The globus pallidus and the putamen part. And in horizontal section of the cerebrum, it appears wedge-shaped with broad base, which is directed laterally. Now you tell me its lateral surface is related to, lateral surface of the lentiform nucleus is related to external capsule, and it is separated from the claustrum by the external capsule. Medial surface is related to internal capsule, and so its medial surface, it is separated from thalamus by the posterior limb and genu part of the internal capsule, and its inferior surface lies close to the anterior perforated substance. So these are the relations of the lentiform nucleus, which includes the two parts. So a vertical plane of white matter, external medullary lamina, it divides the lentiform nucleus into globus pallidus and putamen. And what was internal medullary lamina doing? Dividing the globus pallidus into two segments, the medial segment and the lateral segment. And external medullary lamina, it divides the lentiform nucleus into globus pallidus and putamen. So now this is the putamen, this is the caudate nucleus. You can identify the external segment, the internal segment. Nucleus accumbens is also located here, substantia nigra, amygdaloid body. So putamen is darker in color. It is the larger and lateral part. It consists of densely packed small cells. If small neurons are there, then it will be the sensory part or the motor part? Sensory part, because motor cells are larger in size. So putamen, it consists of densely packed small cells, darker in color. Structurally, it is similar to the caudate nucleus, so that is why it is also the neostriatum. Then globus pallidus is medial part. It consists of large cells. So it is the efferent part or the motor part of the lentiform nucleus. It is lighter in color, and it is known as pallidum as it appears paler in the horizontal section. So putamen is darker, it is the sensory part. Then claustrum is also a thin sheet of grey matter. So we can also include don't talk, please don't talk. तुम क्या ये नीचे झुक के क्या कर रहे हो? तुम कॉर्नर पे बैठे हुए हो? है, इधर देख लो, अब तुमसे ही बात कर रही हूँ. हाँ, कहाँ लोकेटेड है क्लॉस्ट्रम? क्या है क्लॉस्ट्रम? इट्स अ थिन शीट ऑफ द ग्रे मैटर. इट इंटरवीन्स बिटवीन द putamen and the insular cortex. So insular cortex, and this is the extreme capsule. It is considered as a detached part of the insular cortex, or from corpus striatum, or from both. So when traced below, it is continuous with the anterior perforated substance, and its function is unknown. Then amygdaloid body, it is an almond-shaped mass of the grey matter. It lies deep to the uncus, and it lies in the roof of inferior horn of the lateral ventricle. Developmentally, it is related to basal nuclei, but functionally, it is related to the limbic system. So amygdaloid body will be dealt in detail in the limbic system. You have a class
on the limbic system also. Now next basal nuclei is the substantia nigra. What do you know about substantia nigra? Where it is located? It separates which and it is located in the midbrain. Whole of the midbrain, or at the level of superior colliculus, or at the level of inferior colliculus? Whole of the midbrain. It is located in whole of the midbrain, and it is separating what? This is the tectum part posterior to the aqueduct. This is the tegmentum part. So tegmentum part and the crus cerebri, they are separated by a black color thing, that is the substantia nigra. Why it appears black? Because of the presence of the melanin pigment. So there are two parts of the substantia nigra. Which are the two parts? फिजियोलॉजी में हो गया, नर्वस सिस्टम नहीं, वैसे पता है substantia. What are the two parts of substantia nigra? Pars compacta and pars reticularis. So there are, so in which part the melanin is located and in which part the iron is there? So it is a so it is a sheet of pigmented nerve cell. It extends along the entire length of the midbrain, and its cranial end reaches to the subthalamic nucleus. It intervenes between the tegmentum and the basis pedunculi, or the cerebral peduncles. So, and it consists of pars reticularis in front and pars compacta behind. Only the pars compacta contains the dopaminergic neurons, and it is rich in neuromelanin. Pars reticularis is rich in iron, but it is deficient in melanin. तो पार्स कॉम्पैक्टा की वजह से ही उसका कलर है, और जो डोपामीन डिप्लीशन हो रहा है पार्किंसनिज्म में, वो भी कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है? पार्स कॉम्पैक्टा. पार्स रेटिकुलरिस इज नॉट अफेक्टेड इन केस ऑफ Parkinsonism. So this is the black color structure located at the junction of the tegmentum and the cerebral peduncles, and this is the substantia nigra consisting of ये ज्यादा डार्क दिख रहा है. So this is pars compacta. इसके पास में क्या है? Pars reticularis. So melanin provides darker color. Then there is one more nucleus included in the basal nuclei, that is the subthalamic nucleus. इनके नाम बस याद रख लो कि ये क्या है. And zona incerta is also there. It's a part of the this basal nuclei. So zona incerta, subthalamic nucleus. Now I am coming to the connections of the basal nuclei. Now what is the purpose of basal nuclei as a whole? If you think about a patient of Parkinson's disease, तुमको क्या लगता है? मतलब हमने बोला कि कमांड देने के लिए या कॉग्निशन के लेवल पे या वॉलेंट्री मोमेंट्स के लिए देयर इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स. Then for the coordination purpose, for maintaining the posture, there is cerebellum. So why basal nuclei are required, or what do they do? What are the, क्योंकि basic function जो होगा उसी के वजह से उसके connections होंगे. क्या होता है? What is the basic function of the basal nuclei? एक बात हमें पता लग गई कि it's a part of the extrapyramidal system. So something is happening which is not at our will. तो वो क्यों चाहिए basal nuclei? प्री मोटर एरिया में जितने भी सेंसेशंस जाते हैं, या सेंसरी एसोसिएशन एरिया, और या मोटर एसोसिएशन एरिया जो है, वो जो सेंसेशंस हैं, they are going to the basal ganglia, and some of the sensations they will be going to the thalamus, and from the thalamus so they are basically involved in the planning, programming and initiation of the movement. Then they control the muscle tone. इसके अलावा एक वो पूरा लिस्ट जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है पार्किंसनिज्म में? देयर इज रिजिडिटी, सो दैट मीन्स मसल टोन इज इंक्रीज. देयर आर सर्टेन इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑल्सो इन द बॉडी, लाइक व्हेन somebody walks, there is swinging of the arms. So they control the involuntary movement. They should not happen, and they are controlled by the basal ganglia. If basal ganglia they are disrupted or they are destructed, then certain involuntary movements occur along with the voluntary movements.
तो ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, इनिशिएशन, मसल टोन कंट्रोल, these things they are done by the basal ganglia. Now the connections of the basal ganglia, जिसमें तुम्हें ये याद रखना है, there are 3 afferent sources from which the fibers are coming to the basal ganglia. तो कौन कौन कहाँ से इसमें fibers आ रहे हैं? There are corticostriate fibers, thalamostriate fibers and nigrostriate fibers. So afferent are coming to the striatum from the, what is corticostriate? From the cerebral cortex. From the thalamostriate is from the thalamus and the nigrostriate from the substantia nigra. So striatum is the receptive part and pallidum is the efferent part. तुम्हें ये terminology बस पता होनी चाहिए कि striatum क्या है, that is the afferent receptive part, and pallidum as it was consisting of large motor neurons, so that is the efferent part. So 3 principal sources, the cerebral cortex, thalamus and the substantia nigra. So the fibers are coming from 3 sources. Corticostriate fibers, they are coming from the medial surface. There are thalamostriate fibers and then there are nigrostriate fibers from the substantia nigra which are coming. And efferents are striatopallidal fibers, क्योंकि पहले जो putamen है और जो caudate nucleus है वहां से भी fibers कहाँ जाने चाहिए? Globus pallidus में, क्योंकि कुछ जो receive कौन कर रहा है? striatum, लेकिन ये अपना रिस्पॉन्स इसका कौन देगा? पैलिडम. तो पैलिडम तक जाने के लिए भी क्या है? स्ट्राइटोपैलाइडल फाइबर्स एंड देन देयर आर स्ट्राइटोनाइग्रल फाइबर्स and then there are certain pallidofugal fibers also in the form of ansa lenticularis and fasciculus lenticularis. इनके नाम ही बस तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? क्या क्या फाइबर्स हुए? हाँ, स्ट्राइटोपैलिडल, स्ट्राइटोनाइग्रल and there are pallidofugal fibers. Pallidofugal fibers, they go in the form of certain bundles. Those bundles are fasciculus lenticularis and ansa lenticularis. Ansa means certain loop is forming, so pallidal fibers, they are going to the thalamus through a loop. That loop is the ansa lenticularis. Then fasciculus lenticularis, some of the fibers from the subthalamic nucleus, they are combining with the ansa lenticularis and combinedly they are forming the thalamic fasciculus. So is that. And then there are there is one dentatorubro-thalamic tract also. ये dentatorubro-thalamic tract कहाँ से आएगा? dentate nucleus कहाँ है ना? डेंटेट न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का है, सेरिबेलम का है, स्पाइनल कॉर्ड का है, सेरिबेलम. सो देयर, और सेरिबेलम में भी कौन से पार्ट का है? नियो सेरिबेलम पार्ट का जो न्यूक्लियस है, दैट इज द डेंटेट न्यूक्लियस. सो फ्रॉम द एंड even the cerebellum also controls the movements at involuntary level. वो हमें नहीं पता है कि वो joint position कब sense कर रहा है, क्या कर रहा है, but the fibers are coming and cerebellum is also connected to the thalamus through dentatorubro-thalamic tract. So rubro is which nucleus? Red nucleus lying in the midbrain. So they are also connected. How the fasciculus lenticularis is formed, ये सब लिखा हुआ है, तुम्हारे बुक में नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए इसे हम छोड़ देते हैं और वेंट्रल वाला तो हमें बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है. Now functions of the basal nuclei. So they are concerned with the planning and programming of voluntary movements. कभी वो जो पार्किंसंस डिसीज के पेशेंट को किसी ने क्लोजली ऑब्जर्व किया हो, उनको पता है कि मुझे ये काम करना है, पर बहुत रिजिड होता है, ट्रैमर्स होते हैं हैंड में, मतलब सोच लिया है, वहीं पे प्रॉब्लम है कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट है, दैट इज difficult, that becomes difficult if the basal ganglia are disrupted. Please, basal ganglia determine how rapidly a movement is to be performed and how large the movement will be. How large the movement will be, इसको कोई एग्जाम्पल देके बता सकता है? कैसे कंट्रोल होता है कि how large the movement should be?
तुमको एक बॉटल उठाने के लिए जो एंगल बनेगा यहाँ पे एल्बो और आर्म के बीच में, और एक बकेट उठाने के लिए जो बनेगा, मतलब हाउ लार्ज अ मोमेंट शुड बी, so that is controlled by this basal ganglia. So it becomes affected, it decreases muscle tone and inhibit unwanted muscular activity. तो मतलब rigidity नहीं आए, contract, प्राइमरी मोटर एरिया क्या कह रहा है, सिर्फ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कमांड दे रहा है, लेकिन वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गई कि रिजिड हो गई, तो ये जो रिजिडनेस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दी, और द मसल टोन इज कंट्रोल्ड बाय दी cerebellum. Also controls, it also sees, plus the basal ganglia, and it inhibits the unwanted muscular activity. Which part of the cerebellum controls the muscle tone? Neocerebellum, paleocerebellum, or the archicerebellum? Archicerebellum is concerned with paleocerebellum. Neocerebellum is concerned with the coordination part. जो दोनों अपर लिम और लोअर लिम का मसल इन्वॉल्व हो रहा है, तुमको झुक के कोई काम करना है, तो वो दोनों का कोऑर्डिनेशन नियोसेरिबेलम, मसल टोन पेलियोसेरिबेलम, एंड आर्कीसेरिबेलम इज कंसर्न्ड विद द पोस्चर. तो जो गेट जो डिस्टर्बेंस है वो कौन देख रहा है, आर्कीसेरिबेलम. So then it regulates the muscle tone, smoothens the voluntary motor activity, it controls automatic associated movements, it controls group of movements for emotional expression. ये सारा जो पार्किंसोनिज्म के जो फीचर्स दिख रहे हैं ना, वो यहाँ पे इमोशनल एक्सप्रेशन भी कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें मास्क लाइक फेशिस हो रहा है. इट इज कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी. So this is the list of functions, and basal ganglia, the functions of the basal ganglia you will studying in detail in the physiology also. Here we are concerned with the anatomy part or the relations of the basal nuclei that we have seen. Now which अब ये अगर affected होगा तो कौन से टाइप के movement disorders होंगे. So there are two kinds of movement disorders which occur because the basal ganglia are disrupted, or so there are hyperkinetic. Please don't talk. तो बहुत खुश है आज, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम ये सुबह सुबह फेस में स्माइल और ये मतलब इतना ज्यादा वो भी कि कहाँ से लेके आ जाते हो. Where you are sitting? So there are two kinds of disorders, the hyperkinetic disorders and the hypokinetic disorders. So Parkinsonism is an example of hypokinetic disorder, क्योंकि सब कुछ slow है वहाँ पे, अगर कुछ extra moments add हो जाते हैं, those are the hyperkinetic disorder. Can you give me an example of hyperkinetic disorder? मतलब ये जो Parkinsonism तो hypokinetic हो गया, तो hyperkinetic disorders occurring because of the involvement of basal ganglia, they are seen with the chorea, athetosis and the Ballism. ये तीन जो हैं वो typically इसमें basal ganglia involved हो रहे हैं, chorea में, athetosis में and Ballism में. And hypokinetic disorder, lack or slowness of the movement, and Parkinson's disease, इसमें दोनों ही है, मतलब कुछ इसमें रिजिडिटी की वजह से. सो पार्किंसोनिज्म बेसिकली इट इज हाइपोकाइनेटिक, बट certain things are like tremors and all are included, so it includes both types of motor disturbances, so hyperkinetic and the hypokinetic disorders. Now what is chorea? Literal meaning कोई बताएगा? It is a dance form. So it is characterized by certain quick, jerky, irregular, purposeless, involuntary movements. Time कितना हुआ है? So chorea is characterized by quick, jerky, irregular, purposeless, involuntary movements. So it primarily involves the tongue,
It is of two types, Sydenham's chorea and the Huntington's chorea. तुम बहुत बार आगे भी पढ़ लोगे. This is associated with the rheumatic fever, और Huntington's is seen in the adults. Huntington's is more severe and this is less severe, because अगर rheumatic fever control कर लिया तो ये Sydenham's chorea जो है that can be treated. So it occurs in children and Huntington's occur in the adults. कॉर्डेट न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो लैटरल वॉल में ग्रे मैटर दिख ही नहीं रहा है. ये जो इसका लैटरल वॉल और फ्लोर बना रहा था, ग्रे मैटर नहीं दिख रहा है, पूरा कैसा दिख रहा है, व्हाइट मैटर. तो कॉर्डेट न्यूक्लियस और putamen is dramatically reduced in patients with the Huntington's disease. So then ethetosis. Ethetosis is, it consists of slow sinus breathing movements. These are known as ethetoid movements and they commonly involve the distal segments of the limb. तो ऐसे ये हैंड का मूवमेंट देखो, ये स्लो साइनस ब्रीदिंग मूवमेंट, दीज आर एथिटॉइड एंड दे रिजल्ट ड्यू टू लीजन इन दी नियोस्ट्राइटम. देन बैलिज्म जो है वो मेनली इट रिजल्ट ड्यू टू वेस्कुलर लीजन ऑफ दी सबथैलेमिक न्यूक्लियस. देखो बैलिज्म वर्ड ही तुमको याद रखना है, वहां पे कौन अफेक्टेड हो रहे थे, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस. यहाँ कौन सा न्यूक्लियस अफेक्ट हो रहा है, सबथैलेमिक. पार्किंसंस में कौन अफेक्ट हो रहा है, सबस्टेंशिया नाइग्रा. तो ये अलग अलग जो न्यूक्लियाई हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट बर्स्ट ऑफ इरेगुलर मूवमेंट इन ट्रंक, गर्डल्स एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज. एथिटोसिस में डिस्टल एक्सट्रीमिटीज था, हैंड के मूवमेंट होंगे, फुट के होंगे. बैलिज्मस में क्या है, ट्रंक इन्वॉल्व है. तो मतलब ये लार्ज मूवमेंट हो गए, ट्रंक, गर्डल्स एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज आर इन्वॉल्व इन दी बैलिज्मस. इन सबथैलेमिक इट यूजुअली इन्वॉल्व्स दी प्रॉक्सिमल. There can be monobalismus restricted to one limb, or the contralateral side or one half of the body can be affected in the hemibalismus. So then Parkinsonism, there is depletion of the dopamine, and we have discussed the Parkinsonism, rigidity and trembling, forward tilt of trunk, reduced arm swinging, shuffling gait. These are the features of the Parkinsonism. So thank you.